Good morning, students. We were discussing about database model. So I have already told you various types of database model, and we were discussing hierarchical database model in our last class. Today we will discuss about network database model. What do we mean by network database model? What are the various features of network database model? What are the advantages and disadvantages of network database model? So today we will discuss about network database model. Okay, so what is network database model? Network database model, when we were discussing about hierarchical database model, I have already told you that in hierarchical database model, data are stored in a parent-child relationship model. That means what? In which type of parent-child relationship model? The one parent may have more than one children and a child must have one parent only. तो आमे जते बेले डाटाबेस मॉडल हायरार्चिकल डाटाबेस मॉडल डिस्कशन करूथले मु तुमको कहितली हायरार्चिकल डाटाबेस मॉडल रे डाटा केमिति अरेंज हेकि रहउथले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रे अरेंज हेकि रहउथले एवं पेरेंट चाइल्ड भीतर रिलेशनशिप केमिति थिला वन टू मेनी रिलेशनशिप थिला बा वन टू वन रिलेशनशिप थिला वन टू मेनी रिलेशनशिप केमिति थिला मु तुमको कहितली ये पेरेंट में हैव और ये रूट नोड में हैव मोर देन one sub node and a sub node must have only one root node. That means a parent may have more than one children but a child must have one parent only. तेणु one to many relationship रे रहउतला किंतु नेटवर्क डाटाबेस मॉडल रे तार जो डिसएडवांटेज थिला हायरार्चिकल डाटाबेस मॉडल रो जो डिसएडवांटेज थिला सेटा नेटवर्क डाटाबेस मॉडल अवॉइड कला जोटा कि one to many, many to many and many one to one, one to many and many to many relationship रहिला. तो ताले नेटवर्क डाटाबेस मॉडल ले एमिति डाटा अरेंज हेकि रहउची नेटवर्क डाटाबेस मॉडल ले मध्य डाटा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रे अरेंज हेकि रहउची बट हियर व्हाट ए पेरेंट may have more than one children but a child may have more than one parent also. ताले in a network database model network database model data are arranged in a parent child relationship model. ताले in network database model data are arranged in a parent child relationship model. होया आमे तबे डिस्कशन करूथले हायरार्चिकल मॉडल मु सेतबेले मध्ये तुमको कहितली data are arranged in a parent child relationship model but here तुम्हारा difference is that in network database model a child may have more than a parent may have more than one children and a child may have more than one parent also. ताले here a parent may have more than one children and a child may have more than one parent also. ताले नेटवर्क मॉडल ले पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रे मॉडल ले रहिले एवं तुम्हारा कोन गोटे पेरेंट रो मोर देन वन चिल्ड्रन रही पारे एवं गोटे चाइल्ड रो मोर देन वन पेरेंट रही पारंती. ओके क्लियर ताले वर्तमान एठी रिलेशनशिप कोन रहउची
What is the relationship or what are the various relationships among parent and child? तो parent child भितर relationship रहिला कोन one to many or many to many relationship. Okay, ताले here one to many, one to one relationship भी रही परिबो, one to many to relationship is there. Relationship is there. ताले एठी कौन कौन रिलेशनशिप हे पाइबो, one to one रिलेशनशिप हे पारिबो, one to many रिलेशनशिप हे पारिबो, many to many रिलेशनशिप हे पारिबो. ताले हायरार्चिकल मॉडल लो को डिसएडवांटेज का ये अवॉइड कला. हायरार्चिकल मॉडल ले many to many रिलेशनशिप हे पारु नथिला बा many to many रिलेशनशिप पॉसिबल हो नथिला, जोटा कि तुमरो कोथिरे हे पारिबो तुमरो नेटवर्क डाटाबेस मॉडल ले many to many relationship is possible. Okay, ताले what is the structure? Structure कौन अच्छी? आज I have told you that in network model many one to many or many to many relationship is there. That means a parent may have more than one children and a child may have more than one parent also. The structure will be in parent-child relationship model. Suppose here you just see तुमको मुझे वो एग्जाम्पल देती I have given you the example about many to many relationship. तो मुझे तुमको वो एग्जाम्पल देती जे तुम्हारा स्कूल ले जो एनुअल स्पोर्ट्स होची. देखो तुम्हारा सपोज एनुअल स्पोर्ट्स हैला, स्पोर्ट्स रे तुम्हें माने भाग नेलो को गेम रे बा तुम्हारा कौन कौन इवेंट होतला. सपोज हैला 100 मीटर रेस, 200 meter race, 4 high long jump and high jump. Okay, ताले कौन कौन हैला. सपोज 100 meter रेस हैला, 200 meter रेस हैला, लॉन्ग जंप हैला, हाई जंप. तुम्हें सपोज स्टूडेंट ए पार्टिसिपेट कला 100 मीटर रेस रे, स्टूडेंट बी मध्य पार्टिसिपेट कला 100 मीटर रेस रे. ताले कौन हैला it is the diagram of your annual sports and events are 100 meter race, 200 meter race, long jump and high jump. Both A and B are two participants of 100 meter race and yes, student A can also participate in 200 meter race. Student B can also participate long jump. You just see here. Suppose 200 meter race रे भागन ला C and D. So the student C can participate in 100 meter race. Okay. Because a student can participate in more than one event. Okay, more than one आमे जानी चंती गोटे स्टूडेंट बा हमर जो एनुअल स्पोर्ट्स होची गोटे स्टूडेंट्स मोर देन वन इवेंट रे पार्टिसिपेट करि परिबो. तेनु यू जस्ट सी हियर एनुअल स्पोर्ट्स इज द रूट नोड एंड सब नोड्स आर or children are 100 meter race, 200 meter race, long jump, high jump. And here you just see 100 meter race is the root node for A, B and C and 200 meter race is the root node of C, D and A. You just see, I am giving you the example of 100 meter race and 200 meter race. You just see here. तो वर्तमान तुम्हें देखो तुम्हारा स्टूडेंट ए बा पार्टिसिपेंट ए भाग नेला कोथिरे 100 मीटर रेस रे भाग नेला 200 मीटर रेस रे मध्य भाग नै पाला. दैट मीन्स व्हाट
तुम्हारे a participant can participate in more than one events ताले जदि रूट नोड 100 मीटर रेस हैला 200 मीटर रेस हैला ताले बा तुमर जदि पेरेंट 100 मीटर रेस हैला ए बी रो 200 मीटर रेस पेरेंट हैला सी डी और ए रो ताले देखो ए रो दीटा पेरेंट रहिले टू पेरेंट्स आर देयर A have two parents 100 meter race and 200 meter race here you just see many to many relationship is there. That means a parent may have more than one children and a child may have more than one parent also. That means what? The 100 meter race parent रहिला 200 meter race भी parent रहिला ताले एई भली जदी नेटवर्क एई भली जदी रिलेशन रहिला कोनोसी डाटाबेस मॉडल ले ताको आमे कोन कहबा नेटवर्क डाटाबेस मॉडल बोली कहबा बुझियला कोन कथा ताले नेटवर्क डाटाबेस मॉडल ला मु कहली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इज पॉसिबल मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हेई पारिबो ताले व्हाट आर द फीचर्स or advantages of tomorrow network database model advantages rahila many to many relationship is possible. Okay, out on rahila more numbers of nodes of like children's then can be attached. Okay, many to many relationship is possible. More numbers of nodes or children can be attached. Okay, आउ कौन तुम्हारो डिसएडवांटेजेस रहिला ताले एथि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप रहि पारुची जा फल रे कि कोन डायरेक्टली कनेक्ट हे परिबे गोटे चाइल्ड आ गोटे चाइल्ड सहित डायरेक्ट कनेक्ट हे परिबे बा गोटे पेरेंट अदर चाइल्ड सहित कोन करि परिबो बा चिल्ड्रन सहित डायरेक्टली कनेक्ट हे पारिबो ओके तो व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस कोन डिसएडवांटेज रहिला disadvantages are first one is more complex ताले more complex कौन ना जते बेले when now more numbers of nodes or more numbers of sub nodes are connected then एटा कौन होची तो मोर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी जाउची बा सेटा को हैंडल करबा को कष्ट होची बुझ पाछो ए कोन कथा मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू हैंडल ओके ताले जते बेले बढ़ी जाउची सेते बेले कोन होची मोर कॉम्प्लेक्स हे जाउची एंड डिफिकल्ट टू हैंडल okay clear so next class we will discuss about relational database model and object oriented relational database model thank you